Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In previous video we had discussed the human antibody structure and its isotypes, as well as the polyclonal and monoclonal immune response against antigens and their differences. This video is the part 2 of that lecture. In this video, we will learn the production of monoclonal antibodies. There are different types of monoclonal antibodies: murine monoclonal antibodies, chimeric monoclonal antibodies, humanized monoclonal antibodies, and human monoclonal antibodies. In this video, we will be covering the production, application, and drawbacks of murine and chimeric monoclonal antibodies. So let's start with the definition first, that how the monoclonal antibodies are defined. Monoclonal antibody is an antibody produced artificially through genetic engineering and related techniques. A monoclonal antibody, also known as MAB or MOAB, is an antibody made by cloning a unique white blood cell. अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन देखें तो ऐसी एंटीबॉडी जिसे हम आर्टिफिशियली थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड टेक्निक से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मोस्ट कॉमनली मैप भी कहा जाता है, और ये मोस्टली वाइट ब्लड सेल की क्लोनिंग से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रिपेयर होती हैं. So the first in this class are murine monoclonal antibodies. In 1975, Kohler and Milstein discovered that murine or mouse antibodies secreting plasma cells and immortal murine myeloma cells could be fused with the benefit of each retained. This discovery propelled science and medicine into the modern monoclonal antibody era. Murine monoclonal antibodies were the obvious products. Murine monoclonal antibodies had a major impact in subsequent years, but the very basis of their origin presented other problems that would need to be overcome. So the hybridoma development or hybridoma technology is actually used in the production of murine monoclonal antibodies. Hybridoma technology is a method for producing large number of identical antibodies. 1975 में कोलर और मिलस्टीन ने ये डिस्कवर किया था कि अगर म्यूरिन के या माउस के एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स को कंबाइन कर दिया जाए या फ्यूज़ कर दिया जाए माउस के ही माइलोमा सेल्स के साथ, जो इमॉर्टल माइलोमा सेल्स हैं, और दोनों का बेनिफिट रिटेन करते हुए, तो हम एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कर सकते हैं यूजिंग दिस हाइब्रिडोमा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी. म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही फॉर्म होंगी क्योंकि दोनों पार्ट्स म्यूरिन या माउस रीजन के हैं. म्यूरिन एंटीबॉडीज़ का जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में देखने में मिला, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, माउस ओरिजिन, उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हुए जिनको ओवरकम करना ज़रूरी हुआ. सो व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? एक मेथड है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ एक्चुअली. Hybridoma technology is a method for producing large number of identical antibodies, also called as murine antibodies. This process starts by injecting a mouse or other mammal with an antigen that actually provokes an immune response. A type of white blood cells, the B cells, produces antibodies that bind to the injected
antigen. These antibody producing B cells are then fused with the or harvested from the mouse, and in turn fused with the immortal B cancer cells, a myeloma, to produce a hybrid cell line called a hybridoma, which has both the antibody producing ability of the B cell and the longevity and reproductivity of the myeloma. The hybridomas can be grown in culture, each culture starting with one viable hybridoma cell, producing cultures each of which consists of genetically identical hybridomas which produce one antibody per culture, monoclonal, rather than mixture of different antibodies which are called as polyclonal. The myeloma cell line that is used in this process is selected for its ability to grow in tissue culture and for an absence of antibody synthesis. In contrast to polyclonal antibodies, which are a mixture of many different antibody molecules, the monoclonal antibodies produced by each hybridoma line are all chemically identical. So hybridoma technology एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं एक माउस से, जिसे इंजेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ, जो एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक करता है. और इस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में एक बी सेल या टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो एक्चुअली बाइंड करती हैं इंजेक्टेड एंटीजन के साथ. ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स अगेन हार्वेस्ट किए जाते हैं इस माउस से, और इन टर्न इन्हें फ्यूज़ कर दिया जाता है इमॉर्टल बी सेल जो कि कैंसर सेल्स हैं, माइलोमा से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, टू प्रोड्यूस अ सेल लाइन कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा. इस हाइब्रिडोमा सेल लाइन के पास दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है, जो कि बी सेल से इन बी सेल से जो एज अ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, और इन बी सेल से जो माइलोमा सेल्स इमॉर्टल सेल्स हैं उनसे अटेन हुई हुई है. इनमें लॉन्गेटिविटी और रिप्रोडक्टिविटी दोनों प्रेजेंट होती हैं. हाइब्रिडोमा जो यहाँ प्रिपेयर हुआ है, इसे ग्रो किया जा सकता है कल्चर में, और एक कल्चर के अंदर एक वायबल हाइब्रिडोमा सेल लिया जाता है जो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइब्रिडोमास, जिसमें सिर्फ एक एंटीबॉडी पर कल्चर अवेलेबल होती है, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है रादर देन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़. माइलोमा सेल्स लाइंस को यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि इस प्रोसेस के अंदर इनकी एबिलिटी ग्रो करने की बहुत ज़्यादा होती है, और एंटीबॉडी सिंथेसिस की एबिलिटी एब्सेंट होती है. इन कंट्रास्ट टू पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो एक्चुअली मिक्सचर होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो एक हाइब्रिडोमा लाइन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो केमिकली आइडेंटिकल होते हैं. Hybridoma development. Much of the work behind production of monoclonal antibodies is rooted in the production of hybridomas, which involves identifying antigen-specific plasma or plasmablast cells, which are also called as ASPCs, that produce antibodies specific to an antigen of interest and fusing these cells with the myeloma cells. Rabbit B cells can be used to form a rabbit hybridoma. Polyethylene glycol is used to fuse adjacent plasma membranes, but the success rate is low, so a selective medium in which only fused cells can grow is used.
This is possible because myeloma cells have lost the ability to synthesize hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase transferase or HGPRT, an enzyme which is necessary for the salvage synthesis of nucleic acids. The absence of HGPRT is not a problem for these cells unless the de novo purine synthesis pathway is also disrupted. Exposing cells to HAT medium or aminopterine folic acid analog which inhibits dihydrofolate reductase or DHFR makes them unable to use the de novo pathway and become fully auxotrophic for nucleic acid, thus requiring supplementation to survive. The selective culture medium is called HAT medium because it contains hypoxanthine, aminopterine, and thymidine. This medium is selective for fused hybridoma cells. Unfused myeloma cells cannot grow because they lack HGPRT and thus cannot replicate their DNA. Unfused spleen cells cannot grow indefinitely because of their limited lifespan. Only fused hybrid cells referred to as hybridomas are able to grow indefinitely in the medium because the spleen cell partner supplies HGPRT and the myeloma partner has traits that make it immortal, similar to cancer cells. This mixture of cells is then diluted and cloned, and they are grown for single parent cells on microtiter wells. The antibodies secreted by the different clones are then assayed for their ability to bind to the antigen with the tests such as ELISA or antigen microarray assay or immuno.plot. The most productive and stable clone is then selected for future use. The hybridomas can be grown indefinitely in a suitable cell culture medium. They can also be injected into mice in the peritoneal cavity surrounding the gut. They produce tumor secreting an antibody rich fluid called ascites fluid. एंटीबॉडीज़ की या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है हाइब्रिडोमा से, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है एंटीजन स्पेसिफिक प्लाज्मा को आइडेंटिफाई करना या प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स को आइडेंटिफाई करना जो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक टू एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और फिर इन्हें फ्यूज़ करना विद माइलोमा सेल्स. रैबिट के बी सेल्स यूज़ हो सकते हैं फॉर रैबिट हाइब्रिडोमा. पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मोस्टली यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू फ्यूज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जो कि एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स और माइलोमा सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको फ्यूज़ करने के लिए पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका सक्सेस रेट कम है. सो एक सिलेक्टिव मीडियम यूज़ किया जाता है जिसमें दोनों सेल्स फ्यूज़ कर जाएं और ग्रो भी कर सकें. ये इस तरह से पॉसिबल है कि माइलोमा सेल्स के पास एबिलिटी नहीं होती हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने की. ये एंजाइम नेसेसरी होता है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए. एब्सेंस माइलोमा सेल्स मीन्स HGPRT की कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जब तक इसमें डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे डिसरप्ट ना हो. अगर हम इन्हीं सेल्स को एक्सपोज कर दें अमाइनोप्टेरिन जो कि एक फॉलिक एसिड एनालॉग है जो इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, इस सूरत में ये एक्चुअली इन सेल्स को के डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा प्यूरिन सिंथेसिस के, और ये फुली ऑक्सोट्रोपिक होंगे फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, जिसकी वजह से इन्हें सर्वाइवल के लिए एक सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी. सिलेक्टिव कल्चर मीडियम हैट मीडियम यूज़ किया जाता है बिकॉज इसके अंदर हाइपोजेंथीन अमाइनोप्टेरिन और थाइमिडीन प्रेजेंट होता है.
ये मीडियम सिलेक्टिव है फॉर फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स। अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स इस मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज इनमें HGPRT एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सो इस वजह से ये रेप्लिकेट नहीं करते अपने DNA को। अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल्स भी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। इस मीडियम के अंदर सिर्फ वो सेल्स ग्रो करेंगे जो फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स होंगे, जिन्हें हम हाइब्रिडोमास कह रहे हैं, और ये इंडेफिनेटली ग्रो करेंगे इस मीडियम में बिकॉज स्प्लीन सेल पार्टनर सप्लाई करेगा HGPRT को और माइलोमा पार्टनर इमॉर्टल ट्रेट देगा जो कि ये सिमिलर टू कैंसर सेल होती है। ये मिक्सचर सेल्स का जब कम्प्लीटली ग्रो कर जाता है तो इसे डाइल्यूट किया जाता है और क्लोन किया जाता है फॉर सिंगल पेरेंट सेल माइक्रोटाइटर वेल्स में। एंटीबॉडीज़ जो सिक्रीट होती हैं डिफरेंट क्लोन से, उन्हें एसेज के थ्रू एनालाइज किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि उनकी एबिलिटी टू बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन कैसी है। इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं, एलिज़ा या फिर एंटीजन माइक्रोएरे एसे या इम्यूनोडॉट प्लॉट टेस्ट। जो मोस्ट प्रोडक्टिव और स्टेबल क्लोन है उसको फिर सिलेक्ट किया जाता है और फर्दर यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडोमास को इंडेफिनेटली ग्रो किया जा सकता है एक सूटेबल कल्चर मीडियम में, और ग्रो करने के बाद दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू माइस, मोस्टली पेरिटोनियल कैविटी में सराउंडिंग द गट। यहाँ पर ये सेल्स या हाइब्रिडोमास ट्यूमर सिक्रीटिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी जो एक्चुअली एसाइटिस फ्लूइड में एंटीबॉडी रिच फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, and then these antibodies can be extracted and purified. Mice and humans often differ in the glycosylation of antibodies, which is a concern for in vivo application with murine monoclonal antibodies. The role played by glycosylation of antibodies has not been completely explained. However, absent or incorrect placement of carbohydrates on the constant heavy chains or FC regions alters the antibody solubility, serum clearance, and the proper interaction between antibodies and FC receptors. Correct glycosylation of the FC portion of the antibody is very important if the antibody action depends on complement activation or antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Even if the FC functions of a murine monoclonal antibody product are not the prime focus of its function, the other issues of solubility, serum clearance, and general pharmacokinetics can be perplexing problem to overcome. माइस और ह्यूमंस डिफर करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन में एंटीबॉडीज़ की, जो एक्चुअली एक मेन कंसर्न है इन वीवो एप्लीकेशंस में म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। ग्लाइकोसाइलेशन एंटीबॉडीज़ के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर ग्लाइकोसाइलेशन एब्सेंट है तो इनकरेक्ट प्लेसमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की कांस्टेंट हेवी चेन के ऊपर, तो ये एंटीबॉडीज़ में सॉल्युबिलिटी को अल्टर कर सकती है, सीरम क्लियरेंस को अल्टर कर सकती है। इसके अलावा प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड FC रिसेप्टर इज़ अल्टर्ड। अगर ग्लाइकोसाइलेशन करेक्टली होगी तो FC पोर्शन एंटीबॉडी का जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अगर FC फंक्शन म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्राइम फोकस नहीं भी है तो भी देर आर अदर इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद ग्लाइकोसाइलेशन लाइक सॉल्युबिलिटी, सीरम क्लियरेंस और जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स। The major drawbacks of purely murine monoclonal antibodies are the reduced plasma half-life of the murine versus human IgG and the human against mouse antibody HAMA response
which further reduces the half-life. A human IgG normally has a half-life of about 3 weeks. A murine IgG has a half-life of only a few hours. Murine IgG tends to invoke a hammer response that not only causes faster removal of the mouse IgG but also can elicit an anaphylactic hypersensitivity response due to its foreign nature. The decrease in circulating half-life necessitate increasing administered doses, which can then lead to increasing hammer or accepting a reduction in effectiveness of the product. Therefore, a high priority goal has been to reduce the content of the murine epitopes in the monoclonal antibodies while retaining effectiveness. The major drawbacks है purely म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उनमें पहला ड्रॉबैक ये है कि म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्लाज्मा हाफ लाइफ कम होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन आईजीजी एंटीबॉडीज़. ह्यूमन अगेंस्ट माउस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं म्यूरिन एंटीबॉडीज़, जो फर्दर रिड्यूस कर देता है म्यूरिन एंटीबॉडीज़ की हाफ लाइफ को. ह्यूमन आईजीजी नॉर्मली 3 वीक्स तक की हाफ लाइफ होती है इनकी, जबकि म्यूरिन आईजीजी की हाफ लाइफ फ्यू आवर्स तक की होती है. म्यूरिन आईजीजी इन्वोक करती है हैमर रिस्पॉन्स को, जो एक्चुअली फास्टर रिमूवल करवाता है माउस आईजीजी का, और जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स एलिसिट होता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन नेचर. सर्कुलेटिंग हाफ लाइफ डिक्रीज़ होने की वजह से डोजेस की एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज़ करना पड़ती है, जो अगेन लीड करती है इंक्रीज हैमर रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से रिडक्शन इन इफ़ेक्टिवनेस आती है, प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिवनेस में रिडक्शन आती है. इसी वजह से हाई प्रायोरिटी गोल ये है कि म्यूरिन एपिटोप्स के कंटेंट को रिड्यूस किया जाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में while retaining its effectiveness. Nevertheless, many completely murine monoclonal antibodies were and still are used for imaging and therapeutic applications. Some of these include muromonab CD3, which is also known as orthoclone OKT3, an immunosuppressant used in organ transplants, and Y90 Hybridoma dioxazine, commercially available as Zevalin, a radioimmunotherapeutic agent used as an anti-neoplastic agent in non-Hodgkin's lymphoma. The incremental progress towards creating a completely human antibody has been an iterative process. Each improved process creates more human-like antibodies. These improvements have included creation of chimeric antibodies, humanized antibodies, and essentially human antibodies prepared through bacteriophage display or transgenic animals. So let's move further to the next class of antibodies, which are called as chimeric monoclonal antibodies. With the emergence of recombinant DNA technology, monoclonal antibodies with greater amounts of human sequences are now being developed and used. The first step in structuring the ideal human monoclonal antibody was the chimeric antibody. Chimeric antibodies are composed of protein sequences from two origins, murine and human. While murine antibodies are 100% murine, chimeric antibodies are typically only about 33% murine proteins with the remainder human protein. In chimeric antibodies, the variable region with the antigenic specificity remains murine. The constant regions which dictate the antibody isotype are replaced with human proteins. Chimeric antibodies are made by melding murine variable region genes with human constant region genes. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी इमर्जेंस के बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन, जिसमें ग्रेटर अमाउंट ह्यूमन सीक्वेंस का प्रेजेंट हो, आसान हो गया. फर्स्ट स्टेप इसके अंदर है आइडियल ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्म करने में, काइमेरिक एंटीबॉडी की फॉर्मेशन.
Chimeric antibodies प्रोटीन सीक्वेंसेस से मिलकर बनी हुई होती हैं, दो ओरिजिन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस से मिलकर बनी हुई होती हैं. फर्स्ट इज़ म्यूरिन एंड द अदर वन इज़ ह्यूमन. म्यूरिन एंटीबॉडीज़ 100% म्यूरिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, जबकि कैमेरिक एंटीबॉडीज़ में 33% म्यूरिन प्रोटीन होती है, जबकि रिमेनिंग पोर्शन ह्यूमन प्रोटीन का होता है. कैमेरिक एंटीबॉडीज़ के अंदर वेरिएबल रीजन जिसमें एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है वो म्यूरिन रीजन ही रहता है, जबकि कांस्टेंट रीजन जो एक्चुअली रिप्लेट करता है एंटीबॉडी आइसोटाइप को, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है विद ह्यूमन प्रोटीन. कैमेरिक एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए म्यूरिन वेरिएबल रीजन को ह्यूमन कांस्टेंट रीजन जीन्स के साथ फ्यूज या मेल्ट किया जाता है. सो हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? One recombinant DNA method by which this can be accomplished is by isolating the variable region genes from a Murine secreting an antibody that binds the desired target, then amplifying these genes using polymerase chain reaction. The initial product is a copy DNA or cDNA of the murine variable region, which is called as vcDNA. The vcDNA can then be ligated into a plasmid, a small circular extra chromosomal DNA in certain bacteria. In a parallel sequence, a cDNA for human heavy chain constant region is also amplified and ligated into a separate plasmid producing heavy chain copy DNA or HCCDNA. At this point, the vcDNA and HCCDNA can be brought together into a common host cell using co-transfection. So what is co-transfection? Co-transfection refers to the simultaneous transfection with two separate nucleic acid molecules such as plasmid DNA and siRNA. Co-transfection is a common procedure for stable transfection. The plasmid DNA may contain a gene that is easily assayed and act as a marker. This elaborate method provides the desired fusion protein intact chimeric antibody. Because bacteria do not correctly glycosylate human proteins, the antibodies are not usually secreted from the bacteria. Instead, the chimeric antibody is normally expressed in inclusion bodies in the bacteria cells, and then they must be extracted and purified. एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड है जिसके थ्रू हम आइसोलेट करते हैं वेरिएबल रीजन जीन को म्यूरिन हाइब्रिडोमा से, म्यूरिन हाइब्रिडोमा सिक्रेटिंग एंटीबॉडी से, जिसे बाइंड करते हैं डिज़ायर्ड टारगेट के साथ और उसके बाद उसे एम्पलीफाई करते हैं उस जीन को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. जो इनिशियल प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसे हम कॉपी डीएनए कहते हैं या फिर म्यूरिन का वेरिएबल रीजन का कॉपी डीएनए या जिसे वीसीडीएनए कह रहे हैं. वीसीडीएनए को अगेन हम लाइगेट करते हैं प्लाज्मिड के साथ, मोस्टली स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का. पैरेलल सीक्वेंस में जो cDNA है फॉर ह्यूमन हैवी कांस्टेंट रीजन, इसे एम्पलीफाई किया जाता है और लाइगेट किया जाता है एक सेपरेट प्लाज्मिड के साथ प्रोड्यूसिंग हैवी चेन कॉपी डीएनए. यानी आपके पास एक जगह वेरिएबल का कॉपी डीएनए, वेरिएबल चेन का कॉपी डीएनए बन रहा है और एक जगह हैवी चेन का कॉपी डीएनए बन रहा है. इस पॉइंट के ऊपर वीसीडीएनए और एचसीसीडीएनए को कॉमन होस्ट सेल में को ट्रांसफेक्शन करवाया जाता है. को ट्रांसफेक्शन रेफर करते हैं एक साइमल्टेनियस ट्रांसफेक्शन में जिसमें दो सेपरेट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मिड डीएनए एसआईआरएनए से आ रहे हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं. को ट्रांसफेक्शन एक कॉमन प्रोसीजर है फॉर स्टेबल ट्रांसफेक्शन. इस मेथड के थ्रू डिज़ायर्ड फ्यूजन प्रोटीन्स बनती हैं जो कि इंटैक्ट कैमेरिक एंटीबॉडी है. क्योंकि बैक्टीरिया करेक्टली ग्लाइकोसाइलेट नहीं कर सकता ह्यूमन प्रोटीन को, इस वजह से एंटीबॉडीज़ यूजुअली बैक्टीरिया में सिक्रीट नहीं करवाई जाती. इंस्टेड कैमेरिक एंटीबॉडीज़ नॉर्मली एक्सप्रेस होती हैं इंक्लूजन बॉडीज़ में जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, और उन इंक्लूजन बॉडीज़ से कैमेरिक एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है.
Still, this has certain drawbacks. Even with this successful and elegant modification to the original murine monoclonal antibody, there can still be a human immune response to the murine peptide sequence in the chimeric antibody structure. The human against chimeric antibody or HAPA is an immune response to the murine portion or variable region of the antibody. Um, ओरिजिनल म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से अगर कंपेयर किया जाए तो स्टिल इसके अंदर एक पार्ट म्यूरिन एंटीबॉडी का प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है म्यूरिन पेप्टाइड के अगेंस्ट काइमेरिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में। इस ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स को हम ह्यूमन अगेंस्ट काइमेरिक एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो एक्चुअली म्यूरिन के वेरिएबल रीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। The advancement from murine monoclonal antibodies to chimeric monoclonal antibodies was an important improvement in antibody technology. There are certain drugs which are used as chimeric antibodies. Epciximab, which is available as Upro, it is a platelet aggregation inhibitor and it is used with coronary artery procedures. Infliximab is available as Remicade. It binds to tumor necrosis factor and it is used to treat autoimmune diseases. Cetuximab, which is available as Erbitux, it inhibits epidural growth factor used to slow the growth of metastatic diseases. And rituximab, which is available as Rituxan, it destroys B cells and used to treat non-Hodgkin's lymphoma. In next video, we will learn the production and application of humanized monoclonal antibodies and human monoclonal antibodies, as well as the nomenclature of monoclonal antibodies. Thank you for watching this video. Take care of yourselves and help everyone in need around you. Allah Hafiz.